Hello everyone, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. My name is Vibhati and in today's session we will discuss 25 more important questions for NEET. So I hope you guys are ready, and as requested by you, I have taken few questions from oscillations and few from waves. ठीक है, सो फटाफट से आ जाइए, अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मैम ऑसिलेशन एंड वेव्स पे हमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए. सो इन टुडेज सेशन विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम ऑसिलेशंस एंड फ्यू फ्रॉम वेव्स एंड दिस इज द फोर्थ सेशन ऑफ आवर NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज. राइट, सो आई विल शो यू कैसे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बन सकते हैं using the lines of NCERT, simple lines of NCERT. So let's start with question number 1 everyone. Which of the following quantities is always negative in SHM? F vector dot A, V vector dot S vector, A vector dot S vector, or F vector dot V vector. So over here in SHM we know that acceleration and displacement are always anti-parallel. A is directly proportional to minus x beta, right? So over here both are anti-parallel, so the dot product will be negative because the angle between them will be 180 degree. So cos 180 degree will be minus 1. So dot product will be negative. So correct answer is option C. Okay. Now next is this one. In a simple pendulum, the period of oscillation T is related to the length of the pendulum as. So over here period of oscillation is 2 pi under root L upon G. ठीक है, सो यहाँ से बेटा टी स्क्वायर कर लो तो 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी हो जाएगा. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे एल अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आती है, एल अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर. राइट, सो दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. देखो जी कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, सो एल अपॉन टी स्क्वायर विल बी कांस्टेंट विच इज ऑप्शन सी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस वन बच्चों. The acceleration A of a particle undergoing SHM is shown in the figure. Which of the following labeled points corresponds to the particle being at x is equals to minus a? So acceleration versus time graph है बेटा. Acceleration जो होगा, if particle over here is at mean position, acceleration 0. इस वाले एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और ये होता है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, है ना. इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लो, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो, और यहाँ पे इट विल बी अगेन टूवर्ड्स मीन पोजीशन. सो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन एट दिस मीन पोजीशन एज ओमेगा स्क्वायर ए. ठीक है, पॉजिटिव. सो जब बेटा आपका पार्टिकल इस वाले एक्सट्रीम पे रहेगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे रहेगा माइनस ए पे, सो उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. राइट, सो over here acceleration will be positive and it will be maximum, so it is positive at 1 and maximum at 1, so it is option D. I hope it is clear. Right, चलो बहुत ही बढ़िया guys. Now next is this one. Two particles are performing SHM and at an instant of time t, their displacements are this and this respectively. Then what is the phase difference? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इक्वेशन को या तो साइन में लाना पड़ेगा या कॉस में लाना पड़ेगा. सो y1 इज a cos ओमेगा t, राइट, और y2 को लिखते हैं a sin ओमेगा t. तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं साइन में लेके आती हूँ, तो हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2. नाउ दोनों साइन में दोनों के फेजेस कंपेयर कर लो, तो इसका फेज हो जाता है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस इसका फेज हो जाएगा ओमेगा टी. सो कैंसिल कैंसिल, तो फेज डिफरेंस क्या आ गया, पाई बाई 2, 90 डिग्री. ये आपका आ गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट आपका है अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड दिस. द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. अगर पार्टिकल बेटा पॉजिटिव एक्सट्रीम से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मूव करता है तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, अगर टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स है. राइट, सो जब पॉजिटिव एक्सट्रीम या पार्टिकल अपना हमारा ऑब्जर्वेशन पार्टिकल के एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो हम इक्वेशन क्या लेते हैं, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, है ना. तो ये हो जाएगा x इज a बाई 2, a हो जाएगा cos
ओमेगा आपका हो जाता है 2 पाई बाई टी, टी इज 4 इंटू टी, ए कैंसिल, सो यहाँ से बेटा 1/2 इज इक्वल टू कॉस टी पाई बाई 2, और कॉस थीटा 1/2 तब होगा जब ये थीटा हमारा पाई बाई 3 हो जाएगा, राइट, पाई पाई कैंसिल, सो टी हो जाएगा 2/3 सेकेंड्स, टी क्या हो जाएगा 2/3 सेकेंड्स। सो यहाँ से यहाँ ना में पार्टिकल को लगता है 2/3 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो है क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम मेड 2 times keeping the maximum speed to be constant, then it is possible when एक्सेलरेशन a max हो जाता है बेटा मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर a, राइट, एंड v max हो जाता है ओमेगा a, v max हो जाता है ओमेगा a। अब हमारा जो पार्टिकल है यहाँ पे, राइट, उसका हम एक्सेलरेशन 2 टाइम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, ओमेगा ए होना चाहिए। ओमेगा हो जाता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे ए मैक्स आपका हो जाएगा बेटा 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू ए, सो दिस इज 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। अब मेरा ये जो है 2 पाई एफ ए कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो या तो फ्रीक्वेंसी डबल कर दो एम्पलीट्यूड हाफ कर दो, या फिर एम्पलीट्यूड डबल कर दो फ्रीक्वेंसी हाफ कर दो। अब देखते हैं विच वन इज पॉसिबल, राइट। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन वी आर मेकिंग इट 2 टाइम्स, राइट, एक्सेलरेशन को 2 टाइम रख रहे हैं, तो एक काम करो फ्रीक्वेंसी को 2f कर दो एंड एम्पलीट्यूड को यहाँ पे a/2 कर दो, तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो 2 टाइम्स निकल आएगा मैक्सिमम वैल्यू का, राइट। सो यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम करते हो एम्पलीट्यूड को 1/2 करोगे, तो नया आपका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी 2 टाइम्स, एंड दिस चेंज विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ v max। सो वी आर डूइंग फ्रीक्वेंसी डबल एंड एम्पलीट्यूड हाफ, सो ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। वेल डन बच्चों, वेल डन। ट्राई दिस वन। A light spring of force constant 8 Newton per meter is cut into 2 equal halves and the 2 are connected in parallel. The equivalent force constant of the system. तो जब हम spring को n equal parts में divide करते हैं, तो नया spring constant n times k हो जाता है फॉर इंडिविजुअल पार्ट्स। सो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो नया स्प्रिंग फॉर 1 इज 2 टाइम्स 8 एंड फॉर 2 इट विल बी 2 टाइम्स 8, ठीक है। सो ये हो गया 16, ये हो गया 16, ऑलराइट। अब कनेक्टेड इन पैरेलल, सो के इक्विवेलेंट इन पैरेलल हो जाता है k1 प्लस k2 दैट इज 16 प्लस 16 दैट इज 32 न्यूटन पर मीटर, right? So correct answer is option B, 32 Newton per meter. Next is this one. A tunnel has been dug through the center of the earth and ball is released in it. ऐसे tunnel हमने dig किया और ball को ऐसे release कर दिया. It will reach the other end of the tunnel after. यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? So इसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड होता है 2 पाई √r/g. ये r की वैल्यू when you put 6400 किलोमीटर and g is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस केस में बेटा टाइम पीरियड आता है 84.6 मिनट्स में आएगा, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट टाइम पीरियड है यहाँ से जाने का और वापस आने का, ठीक है, यहाँ से जाने का एंड वापस आने का, दिस इज कंप्लीट टाइम पीरियड। हमसे पूछा है आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच टू द अदर एंड, सो यहाँ से जाने का और कंप्लीट आने का 84.6 मिनट्स, सो इन हाफ टाइम इट विल गो डाउन एंड इन अदर हाफ टाइम इट विल कम अप, सो 84.6 डिवाइडेड बाई 2 मिनट्स में नीचे जाएगा और इतने टाइम में ऊपर आएगा, सो दिस विल बी 42.3 मिनट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 42.3 मिनट्स। Now next is this question where we have two bodies m and n of equal masses are suspended from 2 separate massless springs of spring constant k1 and k2 respectively.
if the two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, V max हो जाता है omega into A, so omega 1 A1 is equal to omega 2 A2 for these two bodies. The ratio of amplitude of the vibration of M to that of N, मतलब आपसे A1 upon A2 पूछा है, so A1 upon A2 हो जाता है omega 2 divided by omega 1, right? अब omega क्या होता है बेटा, अंडर रूट के अपॉन एम, राइट? सो ओमेगा 2 हो जाएगा अंडर रूट k2 अपॉन एम एंड ओमेगा 1 हो जाएगा अंडर रूट k1 अपॉन एम. आई एम टेकिंग masses same because it is given same, equal masses. All right, so this will give you under root of k2 upon k1. So correct answer is option D, under root of k2 upon k1. Okay, all right. Now next is this one. A particle is performing SHM with amplitude 20 centimeter and time period 12 seconds. What is the minimum time required for it to move between points 10 centimeter on either side of the mean position? Right? So पूछा क्या है कि अगर amplitude बेटा 20 सेंटीमीटर, ये प्लस 20 हो गया, ये पोजीशन माइनस 20 सेंटीमीटर पे है if this is origin. So आपसे पूछा है कि प्लस 10 से माइनस 10 जाने में कितना समय लगेगा, राइट? तो बेटा देखो, यहाँ से जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से आने में लगेगा और उतना ही टाइम पीछे जाने में लगेगा. तो एक काम करो, 0 से 10 जाने में जितना समय लगेगा वो निकाल लो और उसका डबल कर दो, यू विल गेट योर आंसर. सो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी. ठीक है, अब यहाँ पे x दे रखा है 10, a दे रखा है 20, साइन 2 पाई, टाइम पीरियड क्या है 12 इंटू टी. सो ये जाता है 1/2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 इंटू टी. और साइन थीटा 1/2 तब होता है जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 होती है. सो पाई टी बाई 6 इज इक्वल्स टू पाई बाई 6. सो टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड ओवर हियर, राइट? टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड. मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड लग रहा है तो उतना ही पीछे जाने में और एक 1 सेकेंड लग जाएगा. तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 सेकेंड का टाइम आ जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज दिस वन. In SHM, match the column 1 with column 2 and mark the correct option from the codes given below. Displacement and velocity. SHM में displacement और velocity के बीच में बेटा phase difference होता है pi by 2. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के बीच में फेस डिफरेंस पाई होता है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में फेस डिफरेंस हो जाता है पाई बाई 2. अब मैच कर लो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फेस डिफरेंस पाई बाई 2, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन फेस डिफरेंस पाई एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन फेस डिफरेंस पाई बाई 2. सो इट विल बी क्यू आर क्यू, ऑप्शन बी. ओके, ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट इज दिस वन. In SHM, again we have to match the columns over here, right? So acceleration displacement graph, velocity acceleration graph, velocity time graph, acceleration time graph, इन सब का nature क्या होगा? So acceleration displacement graph is very simple. Acceleration is directly proportional to minus x. So this is a linear relationship with negative slope and passing through origin. तो इसका जो ग्राफ होगा that will be a straight line over here. So first का तो Q आ गया, E क्या ऑप्शन है? ऑप्शन C over here. Now second में अगर मैं बात करूँ velocity acceleration graph, ठीक है? So velocity क्या हो जाता है? If I write velocity as v naught cos omega t, sinusoidal function होता है. I'm taking v is v naught cos omega t, where v naught is the maximum velocity, right? So acceleration will be v naught, acceleration is dv upon dt. So it will be v naught times differentiation of this is minus sine omega t into omega. So this will be minus v naught omega into sine omega t. राइट, अब देखो इसको थोड़ा सा मैं इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी बिकॉज वी आर फाइंडिंग द नेचर ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा साइन ओमेगा टी को कॉस के टर्म्स में लाना है, मतलब वी के टर्म्स में लाना है अपने को. ठीक है, तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी लिखो बेटा, हाउ मच, वी अपॉन वी नॉट, एंड आई बी यूजिंग वन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से बेटा कॉस square omega t will be v square upon v naught square
एंड ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर ओवर हियर। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी is 1 minus v square upon v naught square. So sin omega t is v naught square minus v square upon v naught square का स्क्वायर रूट। ये आ गया, अब उसको यहाँ पे रख दो, तो ये आ जाएगा a माइनस वी नॉट ओमेगा अंडर रूट साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से रखो, वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर, ये कैंसिल, सो दिस इज माइनस ओमेगा अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब ये देखो एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का रिलेशन आया, फाइन। तो ये जो रिलेशन है, ना तो ये पैराबोला है, ना सर्कल है, ना स्ट्रेट लाइन है, सो दिस विल बी नन ऑफ दिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपना साइनोसॉइडल कर्व होता है, राइट, सो अगेन इट विल बी नन ऑफ दिस। Similarly, acceleration time graph is sinusoidal curve, so it will be none of this. So correct answer is option C, QSSS. ठीक है? All right. Next is this one. The frequency of a sound wave is n times and its velocity is v, n, and its velocity is v. If the frequency is increased to 4n, the velocity of the wave will be. So velocity of the wave is independent of sound wave is independent of the frequency, right? So पहले frequency कुछ हो, अभी कुछ हो, velocity of the sound wave will be v only. Okay, so correct answer is option A. Next is this one. If the frequency of sound produced by a siren increases from 400 Hz to 1200 Hz while the wave amplitude remains constant, the ratio of the intensity of the 1200 Hz to that of 400 Hz wave will be. So intensity of a wave, बच्चों, intensity of a wave is directly proportional to its frequency square. ठीक है? So I1 upon I2 will be F1 upon F2 का whole square. So F1 और F2 क्या है? 1200 and 400, so it is 1200 divided by 400 का square, so this cancel, so this is 3 का square, so it will be 9:1, right? So correct answer is option D. All right, I hope this is clear. Hello Aishwarya. Okay, now next is this one. The wave represented by y1 is equals to 10 sin 200 pi t and y2 is this much at a point are superimposed at a particular instant. The amplitude of the wave is, है ना, we need to find the amplitude of the resultant wave if y1 and y2 are superimposing on each other. Try this one guys, try this one. क्या होगा everyone? Amplitude of the resultant wave is under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Phi is the phase difference beta. Phi is the phase difference. कितना phase difference है? You can see that here phase is 200 pi t, here 200 pi t plus pi by 2. How much phase difference is there? Pi by 2. So cos pi by 2 will be 0. So this complete term will be 0. So here it will be under root of a1 square. a1 is the amplitude of the first and a2 is the amplitude of the second. So these are 10 and 20 respectively, right? So it is 10 square plus 20 square. So this is 400 plus 100, 500 square. So it will be 10 root 5. Option B, 10 root 5. I hope it is clear. ठीक है? If you have any trouble, please let me know. All right, well done guys, well done, well done. Chalo, next is this one. Two identical strings A and B are stretched at tensions TA and TB. A tuning fork is used to set them in vibration. Okay, A vibrates in its fundamental mode and B is in its second harmonic mode. Then TA और TB का relation क्या है? TA और TB का relation क्या है? Identical strings है, tension TA TB है.
ए अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, बी अपने सेकेंड हार्मोनिक मोड में वाइब्रेट कर रहा है. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी ए एंड टी बी? राइट, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन 2a 2l, राइट, एंड second harmonic will be 2 times v upon 2l, right? So for A, VA upon 2l is equal to 2 times fundamental frequency for B, which is VB upon 2l, right? So VA is equal to 2VB and V is directly proportional to under root of tension, right? So over here VA upon VB is equal to 2 can be written as under root of TA upon TB, है ना, square करो, so TA upon TB will be 4. Ratio of the tensions is 4, so TA is 4 TB, right? TA is 4 TB. Option B beta, option B. I hope it is clear, right? TA is 4 TB over here. Under root T upon mu velocity, ठीक है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, है ना, स्क्वायर कर लो, सो टी अपॉन टी बी विल बी 4. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट इज दिस, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड अदर एंड फ्री एट अदर एंड. So this is a string which is fixed at one and free at other end, so it will produce node at rigid and antinode at free end. Another mode of vibration will be this, add one more node and one more antinode like this. Next mode of vibration this, right? So over here, in order to do that, in order to do this, what is the length of the string is required, ये पूछा है. सो एक नोड और एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 4 का डिस्टेंस होता है. यहाँ पे इफ यू कैलकुलेट, दिस इज नोड, this is node, this is antinode. So this node to node lambda by 2 and node to antinode it is lambda by 4. So over here required length of the string should be lambda by 2 plus lambda by 4, which is 3 lambda by 4. Here required length of the string is lambda by 4. Here you will find the required length of the string as 5 lambda by 4 beta. So over here, in order to do this, the length of the string should be integral multiple of lambda by 4, right? So odd integral multiple, sorry, odd, 1, 3, 5, 7 and so on, alright? So it should be, yes, odd integral multiple of lambda by 4, which is option A. Alright, next is this one, a source of sound is traveling towards a stationary observer. Observer is stationary and over here source of sound is traveling towards it and apparent frequency heard by the observer is 3 times the original frequency. Well done beta. Apparent frequency over here is 3 times the original frequency and v is the velocity of sound. What is the speed of source over here? So apparent frequency f dash is 3 times original frequency and that is equal to original frequency into v upon v minus vs, है ना. When observer is stationary and source is traveling towards the observer, then this will be the formula for apparent frequency, right? So over here, this will cancel this. So we have 3v minus 3vs is equal to v. So 2v is equal to 3vs. So over here vs will be 2v upon 3. So correct answer is option A. Option A is correct. ठीक है? Well done guys, well done. Good job everyone. Okay, next is this one, assertion reason. Sound produced by an open organ pipe is richer than the sound produced by a closed organ pipe, है ना. Assertion is true. Open organ pipe में you will find all the harmonics, odd, even, everything. But in closed organ pipe, only odd harmonics are present, even harmonics are missing, right? So assertion is true. Reason is outside air can enter the pipe from both ends in case of the open organ pipe. That is also true. If it is open organ pipe, outside air can enter from both the sides.
but reason is not correctly explaining assertion. So assertion, reason both are true, but reason is not the correct explanation of assertion, right? So that's the answer for this one. Next is this one. Speed of sound in O2 gas at temperature T is V. If the temperature is increased to 2T, the molecular oxygen breaks into atomic weight, into atomic oxygen, then speed of the sound under this condition will become 2V, okay? So speed of sound is directly proportional to under root T upon M, under root gamma RT upon M. So if you are increasing the temperature to 2 times, molecular weight will become half, because earlier we had O2, now we have O, atomic oxygen, right? So देखो यहाँ पे temperature 2 टाइम हो गया, molecular weight half हो गया, so again it will be 4 times under root T upon M. So earlier speed was directly proportional to under root T upon M. Now after increasing the temperature, the speed is directly proportional to 4 times under root T upon M. मतलब देखो पहले सॉरी ये 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 times under root T upon M. So by doubling the temperature and by halving this M, we are getting the speed as 2 times, है ना? नई जो speed आएगी that will be 2 times the previous one, which is true, है ना? Assertion is saying this only, so this is true. Now reason देखते हैं. With increase in humidity ने the speed of sound increases, okay? Humid air में speed of the sound increases because density of the humid air decreases, right? So reason is also true, but it doesn't explain assertion correctly. Assertion, reason both are true, but reason is not the correct explanation of assertion, right? I hope it is clear to everyone. Chalo. Now next is this one. Stationary waves of frequency 300 Hz are formed in a medium in which the velocity of the sound is 1200 meter per second, right? The distance between the node and the neighboring antinode is. So over here the distance between node and antinode is lambda by 4, है ना? Consecutive node and antinode. And velocity is lambda into frequency. So lambda will be velocity upon frequency. Velocity is 1200 divided by frequency is 300. So it is 4 meter. So the distance between node and antinode is lambda by 4. So it will be 4 upon 4, that is 1 meter, right? So 1 meter is the correct answer over here, which is option A. Alright, well done guys, well done. Okay. Now next, let's move on to the next one. If you set up the 7th harmonic over here on a string fixed at both ends, if the string is fixed at both ends, we are getting 7th harmonic. How many notes and antinodes are set up in it? So 7th harmonic hai, so there will be 7 loops like this. 7 loops, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So these are notes, 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 and these are antinodes. So you can count it, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 notes and 7 antinodes. So number of notes are 8 and antinodes are 7 over here. Okay? So that is the correct answer, which is option A. Alright. Next is this one. The extension in a string follows Hooke's law is x. String is following Hooke's law and the extension in the string is x. The speed of the transverse wave in the stretched string is v if the extension is x. Then in that string the speed of the transverse wave is v. If the extension in the string is increased to 1.5x, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन था उसको 1.5x कर दिया, तो आपको बताना है what will be the new speed of the transverse wave in it, right? So speed is directly proportional to under root of tension. Tension is directly proportional to extension. Now speed is directly proportional to under root of tension. Tension is directly proportional to extension. So speed is directly proportional to under root of extension. That means V2 upon V1 will be what? Under root of x2 upon x1, right? Compare kar lo. V2 upon V1 is equal to under root of x2 upon x1. V2 is, I don't know, V1 is V
V2 is the speed when the extension is 1.5x, right? So it will be 1.5x. And x1, V1 is the speed V in the string when the extension is x1, which is x. So x cancel. So V2 is under root of 1.5 times V, and I think that is 1.22 V. Option A. Under root of 1.5 is approximately 1.22. So correct answer is option A over here. Alright. So that's the answer. Now next is this one. In a resonance column, two successive resonances are obtained at depths 30 cm and 50 cm respectively. The next resonance will be obtained at a depth. So over here, successive resonance के बीच में कौन सा depth है 30 and 50, मतलब lambda by 2 over here is given as 50 minus 30, है ना? Lambda by 2 over here is given as 50 minus 30, that is equal to 20. So lambda over here is 40 centimeter. Now जो next resonance आपको मिलेगा, next resonance आपको जो मिलेगा, that will be again at a distance of lambda by 2 from the 50. So it is 50 plus lambda by 2 is 40 by 2, that is 70 centimeter. Okay, so correct answer is option C, right? C beta, option C. Okay, all right. Next is this one. The intensity of sound gets reduced by 20% on passing through a slab. Sound is passing through a slab having initial intensity I. After passing through it, it is left with 80% of I. Now, the reduction in the intensity on passing through two consecutive slabs will be. अगर दो consecutive slabs से sound pass करे तो कितना intensity में reduction होगा? तो देखो एक slab से pass किया, so it is left with 80%. Now it will pass through the next slab, तो 80 का भी 80% रह जाएगा. After passing every slab, it will be having 80% only. तो एक slab से pass करने के बाद 80% रह गया, फिर उस 80% इंटेंसिटी के साथ ये दूसरी स्लैब में जाएगा. सो दूसरी स्लैब से पास करने के बाद 80 का भी 80% रह जाएगा. सो इट विल बी 64%, है ना. 80 का भी 80% क्या हो जाएगा? 64%. तो 64% रह गया. हमारे पास 100% था, उसमें से 64% रह गया, तो चला कितना गया? 36%. What is the reduction in intensity? ये पूछा है. So reduction is 36%. I hope it is clear, right? So I think these are our 25 questions, guys. But I want all of your participation in the session, क्योंकि अगर मैं खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो मुझे उतना मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस कर रखे हैं. I want you to learn these questions and I want you to participate in all these questions so that you can learn better, right? नहीं तो फिर ऐसे तो ठीक है चलता रहेगा, but it will not help you a lot. So please, like Aishwarya and Brahmi, you guys can also participate over here and answer your question, right? So utilize these sessions better, because in every session you will be learning 25 new concepts. Alright, at least in physics. Okay, so that is it for today's session, everyone. Thank you so much, guys, and I'll see you tomorrow again from 4. Okay. Yes, you can use intensity wala formula, but again ultimately this is the like shorter version of that. Fine, you can use intensity wala formula, but this is the shorter version of that. ऐसे आप logically इस type के questions कर सकते हो. Okay, all right. Okay, guys, so that is it for today's session, everyone. Thank you so much, and I'll see you tomorrow at 4 again with 25 new questions. Okay, so take care, everyone. All the best, bachcho. Bye bye.